हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ time dilation. It means is that in this you will see how the time dilation will be verified by using experiment. और इस क्वेश्चन को एक तरीके से और जो इसके एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरीके से और आता है, so that time dilation is a real effect. Is a real effect. क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम में आता है कि गिव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन, सेकेंडली सो दैट टाइम डायलेशन इज अ रियल इफेक्ट। तो इसका मतलब ही है, एज यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस क्वेश्चन, कि टाइम डायलेशन क्या वाकई एग्जिस्ट करता है। तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और when you will study in the book then you will find there are in different book different experiment will be given, but here I will give an example of an experiment by which you can get the idea that time dilation is a real effect. So this example is a very simplest example. In books you will find 2 or 3 examples. When this question is appear in your examination, then you will write one example or show some experimental data, then finally your answer will be okay. Don't write 2 or 3 experiments, you just write a single experiment. just थोड़ा सा समझ लेंगे उसको कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है। suppose this is your earth, I'm just considering circular, बिल्कुल सर्कुलर इसको कंसीडर करके चल रहा हूं मैं। अब देखिए, I think it looks good. अब सपोज यहां से कोई रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन सपोज करो सन रेडिएशन जो आ रहा है, और ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है। दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर एंड द सन रेडिएशन इज कमिंग फ्रॉम द सन अराउंड लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस से ही रेडिएशन जो है आपके अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वो डिस्टेंस अलग होगी, अर्थ और सन के बीच की क्या डिस्टेंस है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडिएशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस 10 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, एंड दिस रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन्स। हाई एनर्जी फोटॉन्स आप समझते होंगे कि when they interact with each, high photons मतलब लाइट की बात हो गई, लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो the high energy photons interact with each other and generate some particles, and these particles are known as mu meson और muons भी बोलते हैं इनको, दो नाम से जाना जाता है। अब ये जो पार्टिकल्स किससे जनरेट हुए, these particles are generated with the interaction of high energy photons which is coming from the sun radiation. sun radiation से जो आ रहे थे उनसे वो generate हुए। now अब we are talking about these particles के इनकी बात करते हैं, तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 2.994 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और आप कह सकते हैं 0.998 सी, ऑलमोस्ट सी के ऑर्डर की स्पीड होती है। ये तो हो गई इनकी स्पीड की बात। अब एक चीज और बात कर रहा हूं, इनका एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम जो होता है वो होता है 2 into 10 to the power -6 सेकेंड। अब देख रहे हैं कितना माइक्रो सेकेंड में ये जा रहा है, 2 into 10 to the power -6 सेकेंड इनका जो है एवरेज लाइफ टाइम होता है। तो अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है, बहुत सिंपल से, मैं आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन ब्रीफ, these particles are coming from the distance approximate 10 kilometer,
away from the Earth's surface, towards the Earth's surface. They are coming towards the Earth's surface, and these particles having the average lifetime is 2 into 10 to the power 6 seconds. ठीक है? And their speed or velocity is 2.994 into 10 to the power 8 or 0.998. So now you can calculate the total distance they will travel in this time. Average lifetime meaning is what? After this time, the particle will not be existing. Particle exist नहीं करेगा after this time. तो इस time में वो कितनी distance travel करेगा? You can calculate. You have the time and you have the velocity. So you can calculate the distance. How much distance they will travel in this time? So just do it. Let's say d into t से calculate कर दिया मैंने. Simply देखिए क्या है आपका 2.994. Do it own, आप अपने से कर लीजिएगा. मैं इसको डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा 10 to the power -6. Then finally आपको जो वैल्यू आएगी वो आपकी जो अप्रोक्सीमेट जो निकल के आएगी, नॉट एग्जैक्टली 0.6 किलोमीटर. क्योंकि हमें किलोमीटर की बात करनी है. 0.6 किलोमीटर. अब आप देखिए ये पार्टिकल्स यहां से चलेंगे और ये यहीं कहीं 0.6 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने के बाद खत्म हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी का ये टाइम है, एवरेज लाइफ टाइम, ये इनकी वेलोसिटी है. तो इस टाइम के बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे. So now the question is that how these particles mu mesons or muons are reached to the Earth's surface by after traveling a distance of 10 kilometer. That is true. हमें रिसीव होते हैं हम पार्टिकल, हम रेडिएशन मेजर करते हैं. तो how they are reaching to the Earth's surface? That is the question. So basically the answer is that now the question is that are they particles reach to the Earth's surface? Answer is that yes, the particle will reach to the Earth's surface. How? By using the concept of time dilation, because you know these particles are traveling with the speed of almost c. So b is comparable to c. V is comparable to c. In that case, you know, I already told you time dilation will be applicable. So the average lifetime will be enhanced. So this time will be enhanced by using which concept? By using the concept of time dilation. So by using the concept of time dilation, these particles will reach to the Earth's surface traveling a distance almost 10 kilometers. Now see here. Apply the concept of time dilation. Time dilation का यहाँ पे आप concept apply करेंगे. What you will do? You know the formula delta t dash is equals to delta t over under root 1 minus v square over c square. You know the value of delta t. Delta t is this. This is the value of delta t. So you will put the value of delta t, and you know the value of v, 0.998 c. You can put here and calculate it. I am not doing the calculation. I am just writing directly result. So this comes out approximate 1 to 3.17 into 10 raised to the power -5 seconds. That is the answer. So you can see that this time is enhanced. Delta t is greater than delta t dash is greater than delta t. The average lifetime is enhanced. How? By using the concept of time dilation. Now you can calculate the distance. Let's say this distance, I am writing the name of this distance is d dash v into t dash. I am just taking the notation. Velocity will be the same, 2.994 into 10 to the power 8 into 3.17 into 10 to the power -5. And this is approximately comes out 9.5 kilometers, because this is almost 3 and this is
little bit greater than 3. So if you will multiply it, then you will get almost 9.5 kilometer. So here you can see that it is clearly mentioned here, or clearly you can see from this result, the particles are reached to the Earth's surface. How? By using the concept of time dilation. So you can say that time dilation is a real effect. टाइम डायलेशन क्या है? एक रियल इफेक्ट है. अब देखिए इसको थोड़ा सा मैंने ये तो मैथमेटिकली आई एम एक्सप्लेन, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द लिटिल बिट थ्योरी अबाउट इट. हाउ यू विल स्टार्ट इट? You will write the confirmation of the time dilation is given by the interaction of the sun radiation. By the interaction of the sun radiation consists of the high energy photons coming from the distance approximately 10 kilometer above from the Earth's surface. ठीक है, full stop. The interaction of high energy photons या high energy radiation आप लिख सकते हैं, generates the mu mesons. These particles having the velocity this and the average lifetime 2 into 10 to the power minus 6 seconds. Now using this velocity and this time, we can calculate the distance which may be traveled by the particles. So the distance is only 0.6 kilometer. अब यहां से आप लिखेंगे. Now the question arises, how these particles are reaching to the Earth's surface or will reach to the Earth's surface? Yes, the particle will reach to the Earth's surface by using the concept of time dilation. Now, according to the time dilation, you will write this equation and you will put the value of these three. Now you can see that, calculate the distance. You can write one line here, the delta t dash is greater than delta t because B is comparable to C. So the distance traveled by the particle will be larger in comparison to the first one case. So that is the important or the experimental verification of the time dilation, which shows that time dilation is a real effect. There are numerous examples where you will find time dilation is a real effect, but it's the simplest or the best example which is suited to you or you can see in the daily life. Daily life जो आप radiations आते हैं उस radiations में आपकी study में तो नहीं, जो normal आप देख नहीं सकते, but these particles are coming and they are traveling almost this distance and reach to the Earth's surface. So they are just coming to the Earth's surface after traveling a distance almost 10 kilometers. So this is all about the experimental verification of time dilation or आपका so that time dilation is a real effect. So sometimes this question will appear in your examination in this way. Okay, just deduce the expression for the, if only theoretical question is appear in your examination. So deduce the expression for the time dilation and so that time dilation is a real effect. Yeah, give the experimental verification of time dilation. Sometimes question will come in this way, so that time dilation is a real effect, and another numerical will also be there. So 10 mark question will come with 5 marks here, 5 marks numerical, या 5 marks derivation, 5 marks ये. तो ये आपका उस हिसाब से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हार्डली यू विल राइट इन one or two pages at that's enough to answer this question. So it's a very simplest way to answer of this question.